Okay. Wait. So now it is visible. Okay, screen is visible. Okay, I'm start করছি তাহলে. Everyone is there. Shall I start now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, just a minute. Okay, ঠিক আছে. Right. So first question, Samaste, please open your mock test 6. We'll discuss the Indian geography part. Okay. In just one minute. Note at a pen. Just one second. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन हमें देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे तुम्हारा the latitudinal. समस्त निज निज questions please open so that we'll discuss. It will be easier for all of us. First question अच्छी latitude और longitude ऊपर. The first question है the latitudinal extension. The latitude and longitudinal extension of India is roughly 29 degree. However, the actual distance measured north to south is 3214 kilometer and 2933 kilometer. Why it is so? Like this. Just 1 second. Okay, so we can इतने कौन आंसर मारचो तुम्हें? Let me know. इतने जदि जदि मैं कहिबी इंडिया रा ऑप्शन था कि हमारा latitudinal extension, if I draw that India is okay extension, so India जदि मैं extension कहिबी कि we are having है ना, तो धरुनी. So हमारा एटा रहउची. So what is this is हला तमरा, this is आसी the total distance is here your 32. This is your 3214 kilometer, and where it is in the east west, it is your 2944 kilometer. So why it is so? First, the reason is the distance between the two longitude decreases towards the pole. Distance between two latitude increases towards the equator. Distance between two longitude remains the same everywhere. The distance between the two latitude decreases. Okay. Yeah, the most correct answer it is distance between two longitude decreases towards the poles. A for Agra. Kahinki? A कौन पे हबो? Because since the earth shape is obloid, spheroid or geoid, ठीक अछि चेप्टा टाइप रो इक्वेटर पाखरे हमर बेसी सबुटु बेसी अछि माने पेटुआ टाइप रो अछि. It is the equator is like bulge where it is here tapering माने tapering टाइप रो. but तमे the surface area देखिबो है ना, जदि मैं कहिबी the surface area रो गोटे जदि तमर टेक्निकल रीजन से हम देखिबा the surface area of earth, okay, the surface area of earth goes on decreasing. Okay, goes on decreasing, decrease karibo, goes on decreasing from equator towards pole. ठीक अछि, from equator towards pole. So इपटो area तमरो decrease हेई जिवो. So this is the most correct your choice. This is A for Agra. Is it okay to everyone? बुझियाला समझते? Yes or no? Let me know. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Good. Second option देखिबा with reference to the fisheries sector in India, consider the following statements. Okay, fisheries यदि देखुछो with first question, first statement, it is recognized as a sunrise sector. India is the largest fishing producing country in the world. And third one is your India is fisheries presently contribute to more than 50% of the total fish productions. First statement, India is recognized as a sunrise sector. Absolutely correct. India is the largest fishing producing country in the world. No.
द लार्जेस्ट देला माने भूल लार्जेस्ट फिशिंग प्रोड्यूसिंग कंट्री रे तमरो चाइना आसी जापान आसी यूएसए हैला तो हमर एटा नाही इंडिया नाही लार्जेस्ट फिशिंग प्रोड्यूसर नाही सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग थर्ड इंडिया फिशरीज प्रेजेंटली कंट्रीब्यूट टू मोर देन 50% of the total fish production. Yes, it is correct also. The thing amar bhi achi since it is we are having a large country, so it contributes to the same. ठीक है जी. So 1 and 3 are correct. 2 is wrong. So इतनी देखिए कोटा 2 wrong, 2 wrong, 2 wrong. So answer is C. 2 is equal to C. ठीक है जी. Is it okay to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Very good. थर्ड क्वेश्चन देखिबा द मानसून डिप्रेशन किछि माने ये नाही जहा जहा अछि ओपन पचरी परिबो हैला देयर इज नथिंग किछि लाज करिया नाही साइ करिया नाही आई एम वेरी ओपन हैला फ्रेंडली वे रे पचारा सब जिंस हैला प्रीलिम्स इज वेरी वाइटल wherever you are having any doubt please ask me no problem हैला third question is the monsoon depression consider the following first statement is these are the low pressure system that develops in the Bay of Bengal. Okay, absolutely correct. Low pressure system. Monsoon depression is a warm core system in lower and upper levels of the atmosphere. ठीक है जी. इटी कौन दिला lower and upper level of atmosphere. It is wrong. है ना monsoon depression जो warm core इटा है upper level इटी ही तो हमारा गलत है गला. ठीक है जी. इटा wrong. Upper level ले कभी भी है नहीं. है ना. It is always strict to your tropospheric level. That is what. Third, these intensify into cyclonic storms due to high vertical winds here. Hello? High vertical winds here. Yes, it is correct. ठीक है जी. High vertical storms due to high vertical winds. No, this is also wrong. Intensify into cyclonic storms. No. Monsoons जदि हमें देखिबा मानसून इज ए मैसिव जदि मु इंडिया रो एठी नेबी बे ऑफ बंगाल इंडिया रो ठीक अछि मानसून्स रे पर्टिकुलरली बे ऑफ बंगाल एपटे भी आसी बीओबी एंड एपटे अरेबियन सी ठीक अछि अरब सी ठीक अछि मानसून्स फेनोमेना जोटा कि हुए पर्टिकुलरली दैट इज योर शिफ्टिंग ऑफ योर प्रेशर्स पर्टिकुलरली योर थर्मल इक्वेटर है ना जोटा कि एठी हमर ऑस्ट्रेलिया आसी एंड okay so it is an high pressure bro monsoon sangre semti nahi that is in different thing cyclonic storm monsoon is a phenomenon that is particularly july tomorrow june last tomorrow june first week ru nei ki august mid parjanta your periodic cycle rahi 3 mas parjanta so this is also wrong so only here jodi am answer dekho it is only one is correct if I say only one is correct है ना 3 number jodi mu kahibi which one is above or correct that is only one is correct only Bay of Bengal re है ना as per the given statement fourth question जदि मु देखिबी fourth question रे the Himalayas are formed due to the divergence of the Indo-Australian plate from the Eurasian plate है सर करेक्ट अछि एटा wrong divergence movement माने कोन हैला एटा उल्टाटा हे गेला कन्वर्जेंट मूवमेंट डाइवर्जेंट माने टू प्लेट्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर हैला कन्वर्जेंस माने टू प्लेट्स आर हैला टुवर्ड्स ईच अदर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट रे कोन हेतला ऊपर एटा इंडियन प्लेट एटा यूरेस तमरा हैला यूरेशियन प्लेट आ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट तोटा तळे आमरथले ए माने कोन करले परस्पर को एठी मूव करले ये पडु मूव करला ये पडु मूव करला एठी जो तमरा 33 सी थिला 33 सी रो कादोर फॉर्मेशन ला तमरा हिमालयस so it is जो divergence लिखि देला एटा ही wrong ठीक अछि is it okay बुझियला रे मते को Yes, sir. okay first statement is wrong then next the peninsular plateau in India was formed due to the tectonic shift of the Gondwana land yes it is correct hala peninsular plateau tectonic shift of the Gondwana land ro correct is this is so only 2 is correct काहेकि आगुर हमें जानि चंदी एतरी पृथ्वी फर्स्ट आज की if I took back to the 250 million years ago or 300 million years ago हैला आगुर थिला कोन ऊपर अंगारा लैंड थिला ठीक अछि आउ तळे थिला तमरो गंडवाना लैंड ठीक अछि अंगारा लैंड एंड गंडवाना लैंड ठीक अछि तो एमानन को भितरे तो आज जो जहां भी तमे देखुचो द अरेंजमेंट ऑफ द कंटिनेंट्स
it is because of the drifting of these plates माने परस्पर टू छाड़ी हे गले drifting of the माने your and that is what the repercussion is your Gondwana land और creation sir हला ऊपर को जाएंगे पेनिनसुला प्लेटो क्रिएशन हला काहे गंडवाना लैंड एमाने ऊपर को मूव करले और परस्पर से माने छाड़ी हे गेले जिंस जोटा कि हमर वेगनर हाइपोथेसिस का सो आंसर 2 इज करेक्ट इज इट ओके नमस्ते shall I proceed Yes, sir. Yes, sir. okay good next fifth question Sikkim and Darjeeling Himalayas are best suitable for the tea plantation बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हला Sikkim and Darjeeling Himalayas are best suitable for tea plantations. Which of the following factors help in tea cultivation in these regions? क्या भितर number 1 Karewa formation ठीक अछि आगे पढ़ी देबा कौन कौन then your moderate slopes well distributed rainfall throughout the year Siwalik formation and mild winters ऑप्शन जे देखिबा करेवा फॉर्मेशन तो बिल्कुल भी केबे भी होबनी करेवा फॉर्मेशन कोठी रहे Western coast. कश्मीर करेवा फॉर्मेशन रहइबो दिस इज रॉन्ग ठीक अछि मॉडरेट स्लोप्स एब्सोल्युटली करेक्ट दरकार टी प्लांट सिक्किम दार्जिलिंग हिमालयस रे देन वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर दिस इज आल्सो करेक्ट ओके सिवालिक फॉर्मेशन दिस हैज नथिंग टू डू विथ योर सिवालिक फॉर्मेशंस okay this is wrong and mild winters this is correct so answer जदि हमें देखिबा कोन तमरो 5 रो कोन मारछ त माने 5 is b ठीक है 5 is b for Bombay Sir, Korwa formation पर हाँ. so answer is your this is है ना 1 sorry b for Bombay that is 235 एटी तमे देखिनिया 235 एटी हला हमर 235 हैला करेवा फॉर्मेशन होबनी कि सिवालिक फॉर्मेशन होबनी Hello, sir. yes so answer is b for Bombay we'll go for next yes कोंदु Sir, Korwa formation पर हाँ. करेवा फॉर्मेशन पर्टिकुलरली जदि हम देखिबा एटा कश्मीर रे देखा जाय सेटा जोटा कि तमरो काराकोरम और लद्दाख वैली रे कोन हुए these are the glaciofluvial origin एटी लेखिनी हम कहि दउची हैला करेवा फॉर्मेशंस कोन माने हैला these are basically glaciofluvial sediments हैला लेखिनी glaciofluvial sediments brought by the glacial or glaciers लिखो और glacial whatever glacier erosion हैला माने glacier जतले erosional activity करछि सेतले ऊपर पहाड़ ऊपर आसी छि काराकोरम और लद्दाख रो से आनी की कोन करछि सो तमरो sediments आनी की जमा करछि से वैली रे and that is called your karewa which is very conducive or very supportive to your saffron cultivation it is सेजबो ए जगह कोन हुए saffron cultivation हुए हैला saffron माने जानि छ कोन रे केसर वेरी गुड केसर हैला केसर माने केवल कश्मीर रे एटा बहुत डोमिनेंट saffron cultivation is it okay बुझियला रे Yes, sir. Yes, sir. okay good acha we'll proceed for the next question now seventh is sixth question dela with reference to the local wind in India consider the following statements Chilaikalan are the winters hours originating in the Bay of Bengal that impact Bangladesh and West Bengal. It is wrong. I'll come back to this question again. This statement. The second statement: mango showers are the pre-monsoon showers profound in the regions of the Kerala and Karnataka. Yes, it is correct. Mostly, जब मैं कहिबी pre-monsoon shower टा तमर आसुची mango shower जोटा कहंती pre-monsoon shower और mango showers. Basically in the month of March or April रे इटा देखा जाए pre-monsoon showers टा हैला जोटा कि तमरो your
तमिलनाडु केरला आउ कर्नाटका एपटे रीजन में देखा जाए है केरला कर्नाटका सेपटे so this is also correct pre monsoon shower ta chilai kalan जोटा कि है ना that is an basically a winter जम्मू कश्मीर में mainly देखा जाए जम्मू कश्मीर में देखा जाए particularly तमरो डिसेंबर मिड परे टू नहीं कि जनवरी पर्यंत है तो एटा बहुत ही चिल्ड विंटर है आउ पर्टिकुलरली चिलाई कलन जो तंग नारी देखा से माने से हिसाब रे रखिचंदी चिल रु चिलाई लिखिचंदी चिलाई कलन है से इंटरव्यू को से माने कोन हुए से मानकर मैसिव डिस्ट्रक्शन हुए माने लाइफ लॉस योर क्रॉप डैमेज हुए है roads are blocked, NH are blocked, so it is completely the life is standstill because of this chilai kalan. This is such a chill wind that flows during this December mid to January last year. Right? So this is wrong. Bangladesh or West Bengal, it is basically in Jammu Kashmir. Right? So answer 1 is wrong, 2 is only correct. So answer is 6B, B for Bombay. बुझिए ला रे समझते? Sir, Yes. sir, Chilai is also a festival, no? The people of Jammu Kashmir also celebrate that festival. Yes, because of this winter, they celebrate there. As per their local folks there, they celebrate this festival there also. ହେଲା इंडिया जदी देखियो एक्चुअली तमरो सब जगह रे किछि ना किछि जिंस को नै कि माने तमरो सीजन्स को नै कि समाने फेस्टिवल करन फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग आसाम रे बिहू जानिछो बिहू हां बिहू Yes, sir. Yes, sir. ହେଲା कि मु बिहू रे एग्जांपल देबी बिहू हला कोठी आसाम रे तीन प्रकार रो बिहू अछि ହେଲା गोटे हला योर भोगाली बिहू ହେଲା भोगाली बिहू कंगाली बिहू आ गोटे हला रंगाली बिहू भोगाली रे कोन तांकर क्रॉप प्रोडक्शन हुए तो समाने सेतरे भोजी भात करी डांस करन कंगाली बिहू रे सुखा पड़े जतले वर्षा होएनी सेटा को समाने सेलिब्रेट करन दे वर्शिप द मदर नेचर ହେଲା रंगाली बिहू रे कोन होबो समाने various type of costumes tradition se mane dance karanti nachandu so there is an different types of your bihus okay and jemti mode example dela kintu india ra sabu jaga re pray ei jinso oda achi thik ache is it okay shall I proceed Yes, sir. Yes, sir. okay acha next next is your Malda fault. Next question asks you. Malda fault separates which of the following landform features particularly? Hello? Lesser Himalaya and the Greater Himalayas, Eastern Ghats and the Western Ghat, Vindhya Range and Satpura Range, Chota Nagpur Plateau and the Meghalaya. So answer is this one is correct. D. Baki sabu janga bhut. Right? This is wrong. This is also wrong. This is also wrong. Can be Malda fault jodi mu kahibi just look at here. Let me draw this diagram. ହେଲା एटा हला तमरो मालदा फॉल्ट ठीक अछि जोटा कि तमरो छोटा नागपुर प्लेट्यू और मेघालय प्लेट्यू दिस इज योर छोटा नागपुर प्लेट्यू है ना दिस इज योर छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड दिस वन इज योर मेघालय प्लेट्यू दिस वन है ना दिस इज CH है ना एंड दिस इज मेघालय NG ये जो मझरे तंगर जो गैप है ना दिस इज बिकॉज़ ऑफ योर टेक्टोनिक फॉल्ट रे हेतला जतलो इन ड्यूरिंग योर पैलेजोइक टाइम तो ये टाइम रे फॉल्ट क्रिएशन से है ना ए फॉल्ट रे वर्तमान गंगा ब्रह्मपुत्र आनी की तंगर सेडिमेंट्स डिपॉजिट करे लागि चलती सो दिस इज माल्टा फॉल्ट जेटा के हला तमरो डिफॉल्ट एन इज इट ओके समझते Yes, sir. okay just a minute Question number 8. Which of the following factors positively affect the monsoon season over the Indian subcontinent? कौन करते रे पिले एटा? Mister, कौन कहत? How long? Number 1. श्रद्धा म्यूट करो Formation of
La Nina, okay, absence of Coriolis force, formation of Somali jet stream, and positive Indian Ocean dipole. So এটা question কোন পছলা ভালো ভাবে বুঝো কোন factor is positively affect the monsoon season over the Indian subcontinent. ହେଲା El Nino বর্তমান চালছি দেখুছ ହେଲା जोटा कि बेसिकली एल निनो जो वेरी अब्रप्टली होची बट मन रख एज पर द थ्योरी ला निनाटा सब हम मानसून को हैला अफेक्ट कर माने भलो मानसून हुए हमर सो वन करेक्ट absence of Coriolis force किछि तार मीनिंग नो दिस इज रॉन्ग देयर इज नो इंटर माने Coriolis force संगे हमर मानसून रो किछि सेंति नाही सोमाली जेट स्ट्रीम दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट सोमाली जेट स्ट्रीम रो बहुत इफेक्ट पकाय एटा मानसून टा को ड्रिवन कराय एंड दैट इज व्हाट इट हैज गॉट सिग्निफिकेंस पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल ऑफ कोर्स पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल जो भी मानसून भी हमर मानसून ऊपर से अफेक्ट पकाय सो एथरा में कोन जानले 1 3 एंड 4 आर करेक्ट 2 इज रॉन्ग तो देखि दो को भीतर ऑप्शन अछि yes it is C ठीक अछि is it okay next with reference to India Kakrapada Narora Tarapur and Kaiga are the names of kon korchore eta international border towns nuclear power plant sites below sea level agriculture areas bauxite mining regions kon korchore Option number B. Sir, B. B for Bombay B. हैला B for Bombay Sir, nuclear power plants yes अच्छा ठीक अछि मु क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन को पचारिबे ना कहबो समस्ते पार्टिसिपेट करिवो रे हाँ सर Yes, sir. Yes, sir. अच्छा वेरी गुड Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड काकरापराडा कोठी महाराष्ट्र गुजरात सर Gujarat. गुजरात सर काकरापड़ा इज इन गुजरात नारोरा उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh. P. उत्तर प्रदेश तारापुर Maharashtra. महाराष्ट्र सर Maharashtra. Maharashtra. वेरी गुड महाराष्ट्र काइगा Karnataka. कर्नाटक Karnataka. काइगा इज इन कर्नाटक हमर खाली ई चारटा अछि आउ अछि इंडियन न्यूक्लियर पावर प्लांट यस सर Tamil तमिलनाडु कुदनकुलम वेरी गुड कुदनकुलम इज इन तमिलनाडु बहुत बढ़िया आंसर समस्त दोछ तमिलनाडु रे आउ कोन एति की तमिलनाडु रे कल्पकम Kalpakam is also Tamil Nadu. Please note this Kudankulam and Kalpakam both are in Tamil Nadu. Hala? Au Rawat Bhatta Koti राजस्थान Rajasthan. very good. Rawat Bhatta is in Rajasthan. Hala? बहुत बढ़िया आंसर ठीक है जी तमिलनाडु दीटा कुदनकुलम and Kalpakam. अच्छा next we'll proceed for the question number 10. With reference to the Lakshadweep Island, consider the following statements. Amity Islands are the northernmost, while the Minico Island is the southernmost island. What is the again? All the islands are the coral origin. Yes. It has a flat topography with the absence of hills and valleys. Which statements are given here? Here, with correct. Let me देखिए. Third time, it has a flat topography with the absence of hills and valleys. Absolutely correct. Flat topography था and absence of hills and valleys. All the islands are coral origin. Of course, they all are famous for because of coral island. So, हम India में देखिए ठीक है जी. Your Amenity Islands particularly. Minico এটা এটি তଳେ ଅଛି ঠিক আছে ଆଉ ତଳେ ଆସିଲା ତମର କିଏ ଏଠି ମାଲଦୀପ୍ସ ଆସିଲା ଏଟା ହେଲା ମିନିକୟ ଲକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅର ଆମିନିଦ୍ୱୀପ ଲକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ କୁ କୁହାଯାଇଛି ଠିକ ଅଛି and ମିନିକୟ ଏଟା ଠିକ ଅଛି this is ମିନିକୟ ନା southern most ଆଉ ଏଟା ହେଲା ମାଲଦୀପ୍ସ ହେଲା ମିନିକୟ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଠି 8 डिग्री चैनल ଅଛି इसे सेपरेट कर तो
It will be correct. Next, Amenity Islands are the northernmost, while the Minico is the southernmost. Yes, Amenity Island kuda upar it. This is Amenity. So all the statements are correct. 10 is D. D for Delhi. Okay. Is it okay? Bujilare? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर Good. हाँ हाँ ठीक है. Question number 11. देखिए, in the context of Indian geography, which of the following is the correct order of your order of mountain ranges from north to south? Cardamom Hills, Javadi Hills, Nallamalla Range, Palkonda Range, Nallamalla, Palkonda, Javadi and Cardamom, then Javadi, Palkonda and your Cardamom Hills. Now, there is the answer actually north to south particularly. If I say it is north to south, north to south, and that means we have to go for this one, north to south. Answer B is correct. Thank you. Nallamalla again, then Palkonda. They both are in Uti, Andhra Pradesh. Please note it. लिखी दियो सब खाता पेन धरी की बसरे जो जो डिस्कशन होछ लिखी दियो. This will be beneficial for all of you in terms of your dimensional discussions of all the choices. Okay, लिखी लो. These are all the Andhra Pradesh, and where the Javadi and Cardamoms, they both are in your Tamil Nadu. Right? ठीक है. बुझिला लिखिना रे प्रथम दीटा हला आंध्र प्रदेश रे तापर दीटा हला तमरो तमिलनाडु रे. हां अच्छा, कार्डामम हिल्स कोन पे दिया है की कहि परियो? एनीवन कैन गेस काहे की कार्डामम दिया है? Sir, Cardamom Hills in Kerala, no? It's in junctions in between. Most part lies in Tamil Nadu and few sections it lies in Kerala. Right? Okay. So cardamom, हाँ, cardamom माने हम ओडिया रे कौन कौन था कुछ एटा? Ilaichi. इलायची और गुजराती जोटा हमें बोलते हैं. Gujarati. हाँ, गुजराती. ठीक है जी. मन रखो. कोई भी cardamom पोरे किसी सुनी बात हमें? हैं? Yes, sir. Okay. Okay, good. ହେଲା सबबडे इनक्विजिटिव रहबो जत्ते जिंस हमें डिस्कस करले तमे आहुरी रहबो. इंडिया रे दी प्रकार कार्डामम हुए. गोटेला लार्ज कार्डामम आ गोटेला स्मॉल कार्डामम. ହେଲା लार्ज कार्डामम रे तमरो सिक्किम हैला सबडू फेमस लार्ज कार्डामम रे. हैला सिक्किम इज सिक्किम holds first rank in productions of your large cardamom. हैला स्मॉल कार्डामम सब जगह रे हुए, but mostly in the hilly areas also. हैला केरला रे, तमिलनाडु रे और कर्नाटक रे भी हुए जोड़ा योर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से मैंने आसो हैला. हम लोग लार्ज कार्डामम रे लिखि लियो. लार्ज कार्डामम रे सिक्किम होल्ड रखु जे रैंक रे हैला. सिक्किम इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लार्ज कार्डामम. प्राय तो समस्त बिरयानी खाइ समस्त भल पाओ कि नै रे? हैं? Yes. बिरयानी बने अरे बाप रे, खाइबा कथा माने समस्त. हां ठीक अछि. तो लागे नि गोटे बड़ बड़ गुजराती बाहरे देखिथियो ना पूरा एकदम बड़ जिंदी गोटे जिंदी देखा हुए एकदम भर पोको भलिया देखा हो नै की बड़ बड़ पोको भलिया. हां ठीक अछि. सेटा हला तुम लार्ज कार्डामम. बेले बेले भोक करे हम एमदी चुब्बी देकी पड़ो देखला को पछे लागे कि नै एटा गुजरात थिला बोली. ओके ठीक अछि. नेक्स्ट देखियो 12 नंबर क्वेश्चन. अच्छा कौन अच्छी क्वेश्चन में देखियो. The three different stages of a river. हाँ कौन कहले? सर गोटे पे लार्ज कार्डामम गला गोटे नहीं स्मॉल कार्डामम. Small के कहले नहीं. स्मॉल कार्डामम रो तमरो केरला और तमिलनाडु से माने करिवे. लार्ज रहले से तमरो सिक्किम. सर लार्ज कार्डामम तो अळेच हो ना.
हां इसे अळैच गुजराती सेम हो सर इलायचीटा ओके बड़ वेराइटी एटा छोटा वेराइटी हो आज्ञा हैला आज्ञा ओके ठीक है प्रोसीड करबी Yes, यस sir. सर ओके 12 number question टा देखो the three different stages of river are youth, mature and old stage. In the context, which of the following are characteristic features of young stage of a river? Geomorphology question में पढ़े सर ठीक है लिखी दो है ना characteristics of a young stage of a river. Deep V-shaped valley young stage रे deep V-shaped valley, waterfalls and rapid, oxbow lakes, deltas. In this context, which of the following is at the characteristic features of a young stage of a माने youth stage river? ठीक है जी तो oxbow lake आउ deltas जोड़ा formation हबो एटा particularly कोड देखा जाए नदीर old stage रे प्राय देखा जाए old stage waterfalls and rapids एटा तमरो young stage रे deep shape valley हैला एटा भी young stage रे youth stage रे हैला दीटा आंसर सो 1 and 2 are correct ऑप्शन ने किंतु नाही केवल 2 अछि 3 wrong 3 wrong 4 wrong ऑप्शन रे एटी खाली 2 देछि ठीक अछि किछि नै मे बी ए प्रिंटिंग एरर जहां भी हेतिबो तमन एटी कर देखो हमें एटी तमे लिखिनियो 1 and 2 हैला 3 नंबर बी रे 1 and 2 कर दियो ठीक अछि 1 and 2 कर दियो देखो हमर ए जो डिस्कशन ने ना सबुड बडो जिनसला व्हाट वी गेन द नॉलेज फ्रॉम दिस क्वेश्चंस ठीक अछि बडे बडे प्रिंटिंग एरर रे जे जते डिस्कशन में मन रखियो सेटा बेटर हैला प्रिंटिंग एरर रे हेतिबो तो बी 1 and 2 लियो डी बी सेट वैली ठीक अछि काहे कि ना नदी तार बिकॉज़ ऑफ इट्स high velocity of the water it erode the rock surface and it forms the V-shaped valley ठीक अछि is it okay बुझियला U shaped टा young रे जीवनी तो yes सर U shaped valley टा U shape is glacier ग्लासियर U shape is Glacial glacier action. V हला तमरा river हला fluvial basically V shape is fluvial U shape is glacier is it okay yes sir okay ठीक अछि 13 number question with reference सर आफ्टर माने जेतले रिवर यंग स्टेज रो जेतेबेले प्लेन एरिया को जाय तार तो वैली एरिया टा इंक्रीज हुए सो V शेप रो U शेप होबनी की तार वैली एरिया टा तो इंक्रीज होबो ना बेसिन एरिया देखो भी बढ़ी सेमती तो हमें नहीं परिबनी माने एटा तो ऑलरेडी दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स हैज बीन प्रूवन एंड यू शेप पर्टिकुलरली यू शेप रो जो पर्टिकुलर तमर शेप टा सेटा तमर कोन हुए यू शेप माने गोटे हैंगिंग वैली बेसिकली इट्स एन हैंगिंग वैली आउ हैंगिंग वैली को से जोटा देखा जाए एटा तमरा मोस्ट ऑफ द केस ऑफ योर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इन यूरोप पर्टिकुलरली नॉर्वे हला ग्लासियर टा कोन पुरी एमती ताड़ी की नहीं जाय सब दिस इज द मूवमेंट ऑफ द ग्लासियर टर्न so it looks as if the rock surface it looks as if it is hang हैला तो सेई जुगु ताटा u shape is more prominent in your glacial case हां हमें एटा सेटा देखाई परि हमें देखि परिबो but prominent जेतु हमर जोडा these theories are established na that is why I am telling yes sir okay thank you sir shall I proceed any questions yes sir okay 13 number देखियो with reference to the numbering of national highways considering the following statements okay good case all east west highways are odd numbers ठीक है जी all north south highways are even numbers. The numbers increase from south to north on odd number highways. The numbers increase from west to east even number highways. हला देखा जेमति वर्तमान फॉर एग्जांपल मु दोची आई विल कम टू दिस पॉइंट सब डिस्कशन वर्तमान कोन इंडिया रे कोन चेंज ता हला when this government वर्तमान को गवर्नमेंट अछि
एनडीए ना NDA sir. एनडीए गवर्नमेंट And जेतले आसी हमर वर्तमान की हु इज लीडिंग दिस मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज Nitin Nitin Gadkari sir. Gadkari. वेरी नितिन गुड गडकरी मिस्टर नितिन गडकरी हैला मिस्टर नितिन नितिन हैला गडकरी सर जो अछंदी नितिन गडकरी सर से आसला पर कोन है से देखला हमर हाईवेज रे वर्तमान इंडिया रे अगरु वर्तमान 68000 जो थिला वर्तमान एटा बहुत बॉडी के हमर वी आर टचिंग रिमार्केबल अचीवमेंट अच्छा वर्तमान हाईवेज जो हमर NH5 थिला NH5 ता हमर कोठी ओडिसा देखि जाउतला जाउची हैला जोटा कोठी कोठी जाउची Yes sir. Paradip cross करी जाओ. चेन्नई चेन्नई टू कोलकाता चेन्नई हैला कोलकाता चेन्नई तो वर्तमान NH5 टा वर्तमान कोन हेगला NH16 16 हैला बड़े बड़े एशियन हाईवे भी आछि बट हमर NH16 हमें रखियो तो सामाने काहे की चेंज करले in terms to have a good track of this one because since the highways are the lifeline of a country for its trade and business that is why it has been kept changing the name माने कौन कोले नंबरिंग रे कौन कोले नॉर्थ साउथ को समाने ऑड नंबर रखिले हैला सॉरी नॉर्थ साउथ को समाने रखिले इवन नंबर्स जोटा कि ऑड आगुर थिला ईस्ट वेस्ट को कौन रखिले समाने ऑड नंबर रखिले आगुर सेमति किछि नथला समाने जहा किछि से देथिले तो प्रॉपर ट्रैक पे समाने कौन रखले ईस्ट वेस्ट को समाने ऑड देले और नॉर्थ साउथ को इवन देले दिस स्टेटमेंट्स टू आर करेक्ट काहेकि टू हैव एन प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड okay since highways are the lifeline number of increases south to north and odd number of highways 44 हेला सेतमे सब कौन कहले NH1 टा 44 वो चेंज है हैला दैट इज एन फैक्चुअल रे बहुत दिन चेंज हमर जो करंट एग्जांपल दिले हमर NH5 जोटा कि हमर भुवनेश्वर कटक खोर्धा बरहमपुर हैला एवडा सब देई की जाउची ठीक अछि बालासोर एनी कोस्टल पार्ट ता देई की जाउची मैक्सिमम भद्रक बाकी दिटांग रॉन्ग एटा टोटल उल्टा है हैला इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ दिस इज हैला डिक्रीजिंग सो 1 and 2 आर करेक्ट आंसर इज सी ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए consider the following statements with reference to the measures these are the flat top hills with steep slopes flat top hills with steep slopes these are called as patland on the Chota Nagpur plateau of Jharkhand these are called the patlands of Chota Nagpur these both are correct measures जो तुमने देखियो measures are the high slope these are the measures and this small are your buttes ठीक है this is your measures and this is your buttes flat border टाको measure कहंती high flat ये भी जितले eventually when it erosional actions of the wind it has reduced it to small top hill top that is called your buttes ना तो प्रथम वाला भी correct and patland Chota Nagpur plateau area रे आपको कहंती patland this is also correct है ना so answer is C any doubt please let me know है ना wind actions rate basically wind aeolian actions yes सर 14 रे आउतर सर ठीक अछि अच्छा विंटर मन रख जेमती विंड रो एरोजन एक्शन हुए विंड एरोजन एक्शन यानी विंड ऐसी कोन करे एरोड करे ओडी एटा बेसिकली विंड एरोजन एक्शन को आल्सो कोन कहै छै एओलियन भी कहै छै एओलियन प्लीज नोट इट डाउन एओलियन एक्शन ऑफ विंड भी कहै छै एटा परीक्षा रे कोन पचरंती विंड जगह रे माने एओलियन लिख देथि सो एओलियन माने हैला विंड हैला कौन हुए इन डेजर्ट एरिया रे कौन हुआ डेजर्ट रे पर्टिकुलरली से माने कौन करियो बड़ बड़ जो पहाड़ थिबो पहाड़ गुडा को से माने विंड रो एब्रेजन एक्शन माने इतले विंड ता फ्लो करे से कौन करे दैट इज योर हर्लिंग एक्शन ऑफ विंड हैला व्हिर्लिंग एक्शन जो हुए विंड ता सब बाली गुडा को घसी पिटी की से कौन करियो हैला रॉक स्ट्रक्चर गुडा को सब जल्दी तमे देखि दिबो अच्छा इलेक्ट्रिक पोल सब देखि जो देखि तो गोटे जगह इलेक्ट्रिक पोल ता देखियो तळ पटटा बेसी माड होई कि तमर देखियो माने लास्ट को देखियो पड़ी जाय बहुत जगह इलेक्ट्रिक पोलटा वो देखियो वीक हे तो तळटा मार्क करछ के नोटिस करछ यस रस्ट हे जाय काहे कि
एक तो पानी खाए खाए दूसरा माने then the other thing is that wind सबले मन रख जेतेबेले wind कोन से गोटे टॉल स्ट्रक्चर अछि wind सबले तार बेस टाको माड करिवो wind टा सबले कोन हो ग्रेविटी जो wind आसे तळे माड हो and that is because of reason वर्तमान देखियो बहुत ऊपर पार्ट टा भलो थिवो तळ पार्ट टा नष्ट होतो जो प्राय देखि दियो एना बहुत जगह रे लाइट पोस्ट गोडा तळे को समान सब कंक्रीट कर दोछन नोटिस करिछ बहुत जगह रे कंक्रीट कर Yes, दोछन sir. Yes, sir. एबे करू this is because of the same thing that I am giving an example in our areas with ki wind amar eti basic predominant no wind predominant ta koti desert area re jenti for example I am taking an example of Libya desert hela Libya desert in Africa jotre ki tamara rocky desert or stony desert ko jaye Libya desert ठीक अछि तो Libya desert रे कोन हुए এই যেতলে রক গুড়া কাটি কাটি সে কোন করে ফ্ল্যাট টপড হিল कर दे दैट इज नोन एज दिस इज मेजा गोटे हला माने हला स्पेनिश नेम हला ओडिया रे हमर बेले कहंतनी अरे मेजा टा दे दिलु मेजा मेजा माने हला कोन टॉप फ्लैट लैंड माने से रॉक टा कोन वे पॉलिश हेई फ्लैट लैंड दैट इज कॉल्ड योर मेजा और जेतले एटा पुणी माड हेई छोटो ही जीवो माने एपडू खाई जीवो हला एपडू खाई जीवो खाई गई लास्ट को जते छोटी है जीवो एम फ्लैट फ्लैट टा थिबो ऊपर तो सेटा को कोन कहे बुटे तार माने बड़ स्ट्रक्चर टा को मेजा कहबा आउ तळटा को बुटे कहबा सेम दी फ्लैट टॉप लैंड थियो हला एंड इट इज बिकॉज़ ऑफ द इरोजनल एक्शन ऑफ द विंड बिकॉज़ ऑफ द एब्रेजन हला विंड रो जो एब्रेजन एक्शन पे इज इट ओके बुझियला एतिक रे सर फ्लैट ओ मेजर्स विथ डिफरेंस कोन मेजर्स हला पा लार्जर वन बड़टा बुटे हला स्मॉलर वन इट मु डायग्राम करछि ना बड़टा बड़ नो सर प्लेट्यू आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेट्यू यू आर टॉकिंग अबाउट प्लेट्यू in terms of I am telling that one in a physical feature जदि तमे देखिबो मेजा रो जो appearance टा हो सेटा बड़ फ्लैट लैंड वेयर इज बुटे कोन होबो इवेंचुअली कोन होबे ए एरोड एक्शन जरगु से धीरे धीरे खाई जाय एपडो साइड गोडा तमरो एरोड होई जिवो ये एपडो सेपडो खाई जिवो खाई लास्ट को ए एटा को एति की छोटो होई जिवो पुनी छोटो होई जिवो बुझियला नाउ इज इट ओके दिस इज मेजा एंड दिस इज योर बुटे सर बुझियला रे नाउ इट इज ओके हेलो सर सर आबरा जम करजन आउ रिटर्न सर जो नाउ इट इज ओके पचारथला मैडम पचारथले इज इट ओके नाउ यस सर थैंक यू सर ओके ओके यस है ना सब माने जल्दी माने यस नो कहले आई एम आल्सो क्लियर दैट यस माय स्टूडेंट्स आर गेटिंग दैट वन ग्रैपिंग दैट वन यस सर सर मेसा और प्लेटो रे डिफरेंस कोन कोथरे मेसा और प्लेटो रे डिफरेंस कोन प्लेटो भी तो माने फ्लैट टॉप ना तारो भी देखो प्लेट्यू और मेजर जदी तुमने देखियो प्लेट्यू इज बिट माने in a larger scale plateau is much lengthier and bigger. Plateau is maybe it runs from 100 to 200 kilometers more, but mesa it cannot be. Mesa in basically in confined to in small, maybe in 1 kilometer or less than that one. But plateau is माने बहुत बड़ा. जैसे for example छोटा नागपुर plateau बहुत बड़ा area. More than the radius यदि देखियो it is more than 300-400 kilometers. Even if sometimes more it is. ठीक है plateau is always higher though they are having the same resemblance with them the flat top land हला अरे टेबल टाको कोन कहले टेबल हम जो टेबल तमे पाठ पढछो दैट इज आल्सो इन plateau माने फ्लैट टॉप लैंड एंड बिट एलिवेटेड मेजा हला टिके ताडू छोटो आ ताटू माने सेही है जे तमे plateau और मेजा मिस्टर देखियो plateaus are much larger bigger the radius may extends to sometimes 300-400 or 500 kilometers is it okay now यस सर okay shall I proceed Yes, sir. 15th number question snow line is greater in eastern Himalayas माने मत आज ज्वर हो कि पूरा पाग चेंज पूरा वायरल सब जगह रे मो टिके कास होची सो बियर विथ मी ओके अच्छा नेक्स्ट देखो रे the snow line is greater in the eastern Himalaya than in the western Himalaya due to the following reasons कौन Eastern Himalaya
lie at a greater latitude than the western Himalaya. क्या मतलब कोटा है कि स्नो लाइन टा अधिक है ହେଲା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ସ୍ଲୋ ଲାଇନ ରେ ଏପଟେ କଣ ପାଇଁ ଅଧିକା ଇଷ୍ଟର୍ନ ହିମାଲୟ ଟୁ ଇଷ୍ଟର୍ନ ହିମାଲୟ କଣ ପାଇଁ western Himalaya ଟୁ ଅଧିକା Eastern Himalaya lie at the greater latitude than the western Himalayas. Okay, next, western Himalayas have lower precipitation than the eastern Himalayas. Okay, and it occurs mostly as snowfall. The amount of snowfall is more than its loss in the eastern Himalayas than in the western Himalayas. Stronger dry and hot winds blow throughout the western Himalayas than the eastern Himalayas. जदि मुझे देखिए सबुठ सुइटेबल आंसर कोटा हैला ताले बी को दबा आ रीजन कोन पे मैं कहूची stronger dry and hot winds blow throughout the western Himalaya than the the eastern Himalaya. ठीक है that it is not sufficed to why the snow line is greater ऐसा अगर किसी का रिलेशन नहीं हैला डायरेक्ट रिलेशन. The amount of snowfall is more than its loss in eastern Himalaya as the western Himalaya. Snowfall amount of snowfall is more than in loss. It will be wrong answer किसी नहीं. अच्छा मोर को एटा को कहीं रिजेक्ट कर ईस्टर्न हिमालय इज ग्रेटर लैटिट्यूड देन द वेस्टर्न हिमालय. लैटिट्यूड ऑफ कोर्स लैटिट्यूड रे यदि हम देखिबा ये 30 डिग्री 44 पकरे कि 30 हैला 31 32 33 रे अछि ये जाई के ऊपर काराकोरम लद्दाख एमाने 37 पाख पके पहुंच जाई छथि. ठीक अछि बट ता संगे यार किछ रिलेशन नहीं. जदि हम एटा देखिबा कि इट प्रेसिपिटेशन दा इज मोस्टली इन द स्नोफॉल. यस इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. precipitation टा हमर कोथरे होची स्नोफॉल टा. स्नोफॉल इज आल्सो ए वन काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन. ठीक अछि माने जो बर्फ जो पड़े माने तुषार पड़े जोटा सेटा कि सेटा भी गोटे वन काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन इन द हायर अल्टीट्यूडनल एरिया. this is the reason why eastern Himalayas have western Himalaya to samane besi samane acquire karan. So answer is 15 is B for Bombay. ठीक अछि डी ऑप्शन टा टिके कोन डी ऑप्शन टा strong dry okay strong dry hot winds हैला blow through the western Himalaya than the eastern Himalaya. एटी ही तमरो प्रथमे रिजेक्ट हेला हॉट विंड सियाड कोड आसो हॉट विंड रे एते एलिवेटेड रे समुद्र सी एमएस मीन सी लेवल रु से जाई कि तमरो 7000 7500 मीटर ऊपर जे हॉट विंड कोड आसो तो एटी डायरेक्टली रिजेक्ट. यस सर यस ओके ठीक अछि shall I proceed now? यस सर. राइट सुनो मु तुमको सजेस्ट करिवि प्रीलिम्स रे तले तमे करूचो हैला सुनिबो समस्ते मन देई की Yes, sir. यस सर. सब बळे पेंसिल टा पाखरे Yes, नै. sir. वेरी गुड. सब बळे पेंसिल टा संगे रखिथिबो हैला. पेंसिल टा कोन जतले तमे क्वेश्चंस रीड आउट करूचो हैला मु तुम कहि देबी आगु धीरे धीरे बहुत बड़े ट्रिक कहिबी. तमे पेंसिल तले करूचो तमे अंडरलाइन करि चला और सेठी तमे मुंडली बुला और क्रॉस करो. बहुत जगह में कोन करू हाथ रे और पेन एंत पढी दो फटकरा कर दो. So when you underline something that means you are distinguished or you are sending signal to your brain नहीं नहीं भाई एटा नुह एटा करेक्ट एटा माने तमे तम ब्रेन में तमे मार्किंग कर दलो. बहुत जगह कोन हुए हमें से समय कोन हुए प्रेशर टिके थाए एग्जाम ओरिएंटेड टाइम रे माइंड रे प्रेशर थाए बिकॉज़ ऑफ द योर से माने 2 आवर्स बहुत जिंस करिया को थाए तो से जगह ना अंडरलाइन करि देले हमर प्रोमिनेंट हबा एंड विजिबल हबो. एटा भी जतले तमे सिलेक्ट देले चॉइस ऑप्शन करिवो हैला आ ताको देले ओएमआर शीट को तमे ट्रांसफर करू चमन रखो हैला सब बळे पेंसिल करी की गोटे पेज करला संगे संगे ताको ट्रांसफर करो. एंत नो जे गोटे दीटा तीनटा करली सेटे नै 1 by 1 कले सेमति देले तमे देखिबो बाय साइकोलॉजिकली बहुत टाइम नष्ट होवे. मेक इट सब गोटे पेज सार देलो गोटे पेज को आगे करो रैंडमली पढी दियो हैला. गोटे पेज सरला परे तापर तमे सेटा को ओएमआर को ट्रांसफर करो कि चारटा पेज कलो ताको धीरे धीरे गोटे गोटे करी की करि परियो. मु तुमको एटा कहूची गोटे कलो पुनी गोटे कलो पुनी आ गोटे करछ पुनी ट्रांसफर करियो सेमति करनी. इट इज लॉट्स ऑफ टाइम कंज्यूमिंग. तमे डायरेक्ट गोटे पेज सरला धाई धाई संग संग ऊपर को ओएमआर को ट्रांसफर करियो हैला. 60 नंबर क्वेश्चन देखिबा. Consider the following statements in India. Munajit
is the principal source of rare earth and thorium. Yes. Hello? Then monazite can be used for the production of atomic energy as per the production of atomic energy as per the Atomic Energy Act 1962. Yes. Kerala is the highest reserves of monazite in India. যদি আমি দেখিবা atomic monazite যদি তুমি দেখিবা monazite can be used for the production of atomic energy as per the Atomic Energy Act. This is also correct. प्रथम टा भी correct. Monazite is the principal source of rare earth and thorium. Monazite sand टा कौन हुए particular जो तुम कहबी monazite sand रो ना तमरो कौन हुए थोरियम रेयर अर्थ मेटल जोटा कि तमरो यूरेनियम और थोरियम मन रखो थोरियम जोटा हमर अछि ना थोरियम हला हमर मोनाजाइट रो थोरियम हमर प्रोडक्शंस हुए ठीक अछि थोरियम व्हिच इज एन रेडियोएक्टिव सब्सटेंस दैट हेल्प्स इन योर न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शंस ठीक अछि न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शंस में तमरो your monazite sands are much favorable monazite sands particularly so good second ओडिशा रे मोनाजाइट सैंड मिले रे यस सर कोडी मिले मोनाजाइट सैंड हमर ओडिशा रे मोनाजाइट सैंड देखा जाउनी हां है ना देखा जाए सर सर अवेलेबल अछि बट एक्सट्रैक्शन रेट कि ना नहीं जान अवेलेबल अछि सेडिमेंट पेपर देखा जीवा पसंद सर फिल्टर एरिया मोस्ट ऑफ द बीचेस मन रखा ना बीच रे मिले मन रखा है ना बीच रे हम देखियो सर गंजाम पोस्ट मिले यस यस सर गोपालपुर आई एरियल गोपालपुर आई एरियल हां गोपालपुर गंजाम छत्रपुर सर मैक्सिमम मिले हां यस नियर छत्रपुर सर हां गोपालपुर गंजाम और यहां पर सही साइड रे मिले बेसिकली अच्छा थोरियम वर्तमान यूज करा होचे एज एन रिप्लेसमेंट ऑफ यूरेनियम हैला और जदी एटा देखिबो दिस इज रॉन्ग केरला हैज द हाईएस्ट रिजर्व ऑफ मोनाजाइट साइड नो एटा हलो तमे लिखिनियो आंध्र प्रदेश इज द हैला ग्रेटेस्ट रिजर्वायर ऑफ योर थोरियम रिजर्व्स नियर अबाउट आंध्र प्रदेश तमरो 31 और 32% तमरो बेसिकली आंध्र प्रदेश तमरो हमरो रिजर्व रखिस इंडिया रे हैला केरला नो So 3 is wrong. So 3 1 2 correct. The answer देखियो choice रे. So A. ठीक है जी 16 is A. Okay. ठीक है जी 17 देखियो next. Okay. Which of the following states has all characteristics given below? It is a major source of chromite and is one of the few states major source of chromite and it is one of the few states of India that produces magnesite. Okay. Banerghatta National Park is located in the state. Okay. Saravati River is there. It clearly jana पड़ची कि एटा है कर्नाटक वेरी गुड सारावती रिवर हम जानले कर्नाटक रे बनेरघट्टा नेशनल पार्क जोटा कि बैंगलोर साउथ बैंगलोर रे अछि तो सिंपल देखो ए बडा क्वेश्चन है कोन माने इट इज वेरी इजी मो इथि पय कय इट इज not necessary that you know all the points. If you know only one statement or one point, that is adequate enough to choose the correct answer. इति देखो तमे जदी बनेरघट्टा जणे दी जानि छि आ बैंगलोर बुली जाई छि फटकिना मारियो हो एटा छत्तीस कर्नाटक रे एटा स्टेट ओनली दे दी छि ना छत्तीस बनेरघट्टा तो छत्तीसगढ़ ने कि महाराष्ट्र तमिलनाडु में सिंपल तमे जदी बनेरघट्टा खाली जानि छि एठी मार दो सारावती रिवर्स रे कोन पे फेमस यस Jog Falls. Okay, Jog Falls is located in the Saravati rivers. Okay, take it.
Is it okay? Shall I proceed? Next. $18 number question देखिए. Which are the with reference to the physiography of the peninsula India, consider the your following statements. The Western Ghat is spread over the 6 states, while the Eastern Ghat is over the 5 states. Western Ghats are continuous and can be crossed through the passes, while the Eastern Ghats are discontinuous and dissected by the rivers. The Western Ghats and the Eastern Ghats converge at Nilgiri Hills. This is correct 3 number. 3 number Western Ghats are continuous and can be crossed through the passes, while the Eastern Ghats are discontinuous and dissected by the river. This is also correct. Okay. ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା कि 6 state और 5 state गणि देवा हमें प्रथमे Eastern Ghat और Western Ghat. देखो Western Ghat and this is your Eastern Ghat. ठीक है जी. This is Western Ghat and this is easy. Western Ghat में कहाँ ने भी कोई चल रहा. Yes. Sir, Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala. Kerala. Okay, ठीक है. Kerala में गली. Then Tamil Nadu. Then Karnataka. Karnataka. Goa. Maharashtra. 1, 2, 3, 4, 5. आउट कीजिए. Gujarat. छोटा है गला. एपड़ कीजिए. This is 6 number. 5 number की कीजिए एमएलए. इटी. तमिलनाडु, झारखंड, उड़ीसा, then आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आओ किए वेस्ट बंगाल का रिपोर्ट. हाँ, वेस्ट बंगाल भी है ना. माने साउथ वेस्ट कॉर्नर जो देखियो वेस्ट बंगाल भी सेपटे आसे. तो टोटल है केते बोला 5 नंबर्स. ठीक अछि. एते तुम स्टेट ना भी जान दलो. एंड गुजरात रे गोटे इनसम कहबी. गुजरात सदर्न गुजरात रो जाई. गुजरात रे एंटायर नाही है ना. गुजरात रो ई सदर्न गुजरात रो सेपटे से मेन थिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर. This kind of settlement is fragmented into several units physically separated from each other. These units are locally called Panna, Para, Pali, Nagla, Dhani, etc. in different regions of the country. Settlement. Panna, Para. The examples of the can be found in the middle and the lower Ganga plains. It is mostly likely in the description. This is hamleted. It is one settlement geography. Hamleted settlements. Just you have to remember this one. Most of the middle or lower Ganga plain data देखा जाए. Several units physically separated from each other. Hamlets वजह भी local hamlets. माने गोटे ए टाइप रो एटी गोटे बस थिबो ए टाइप रे गोटे थिबो. Hamlet जोटा कहन. प्राय तो से जगह रे तमरो concentrated population is more. Ganga plain, middle and lower Ganga plain में देखा जाए. 20 number question. One question is, the sugar industry in India is shifting from southern states toward the northern states. In this context, consider the following statements with reference to the sugar industry. It is a weight losing industry. Absolutely correct. Higher state advisory price. Higher state advisory price given by northern state is causing the shift of the sugar industry from the South India. Higher state advisory price because given by the northern states is causing the shift of from South India. This is also correct. Thirdly, the highest sugar producing state,
highest sugar producing state in India is Uttar Pradesh. ठीक है? This is wrong. किए जीवो sugar producing रे? Maharashtra. 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 It is not Uttar Pradesh. ठीक है? सर जो आपण जो ईस्टर्न घाट रे झारखंड को नेले सर झारखंड रो को पार्ट ईस्टर्न घाट रे जीवो नेत्रहाट हिल्स झारखंड नेत्रहाट हिल्स है पर्टिकुलर नेत्रहाट हिल्स जो तुम झारखंड मिडिल रे अच्छी रांची प्लाट्यू ठीक है नेत्रहाट हिल्स सेगुडा सब आसीबो तुमरो ये अच्छी ना नेत्रहाट पहले तो छोटा है जीवो स्टेट सर तेलंगाना को भी इंक्लूड सर सर तेलंगाना भी तो ईस्टर्न घाट्स रे आसुची ना किछि पोर्शन ईस्टर्न घाट्स रो तेलंगाना देके भी आसुची most part of Telangana is a plateau. Telangana plateau. But The total to chatta asibo. No. चारटा तो केबे भी हबनी सर जो आपण जोटा कहले झारखंड रो जोटा सेटा गडजात हिल्स रो ऊपरटा तो हम ओडिसा रो जो गडजात हिल्स अछि हां हां तार ऊपर सेक्शन टा कथा कहले तो जो झारखंड रो जो पार्ट जस्ट अ मिनिट सर 19 नंबर टा टिके देखेबे आ करे क्वेश्चन टा तो जदी कहूच वन बाय वन ठीक रो झारखंड पर जदी मु देखिबी झारखंड ओडिसा ओडिसा पर केतरा झारखंड ओडिसा आ गोटे रोज तमर की आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है ना तो बेटर रहइबा तमरा तेलंगाना तो मु नहीं परिबिनी तेलंगाना रे मोस्टली ये रे भी तमे रादर जदी मु छत्तीसगढ़ कहबी इट इज मोर करेक्ट कारण बस्तर रीजन सेपटे भी वेस्ट बंगाल को भी धरिबिनी देखो किछि ना पहाड़ आसे एमति नो जोटा कि मेजर पर्सन है इट कोन भी एबडे क्वेश्चन रे ठीक डिबेटेबल रे मन रखा जोटा कि मेजर पर्सन्स रे देखियो हैला मेजर पर्सन जदी देखियो तमे मु ना वेस्ट बंगाल को धरिबी ना मु तेलंगाना को धरिबी हैला रादर छत्तीसगढ़ सर जो छत्तीसगढ़ रे जोटा कहउछन सेटा बस्तर पैटियो रो जो बाइला डिला अछि से पाटा यस बाइला डिला जोटा अछि से गोटा की हां हां से पट्टा अच्छा ठीक अछि दंडकारण्य बस्तर प्लेट्यू से पाटा व्हिच इज मोर डोमिनेट बाय दिस वन ओके सो वेस्ट बंगाल जगह को एलिमिनेट कर इट इज रादर मोर छत्तीसगढ़ सो आंसर जदी हम देखिए पांचटा रे बाकी सब ठीक अछि छत्तीसगढ़ इज मोर प्रोमिनेंट यस तापरे सर 19 आंसर टा कोन होबो टिके कहबे प्लीज 19 आंसर टा हैमलेटेड हबो एटा तो तमरो फैक्चुअल क्वेश्चन एटा मन रखिया हबो एक्चुअली जदी तमरो सर सॉरी 19 नहीं 18 टा ऑल आर करेक्ट दिस इज ऑल आर करेक्ट थैंक यू सर ओके सर वेट लूजिंग इंडस्ट्री माने कोन वेट लूजिंग माने तमरो जो प्रोडक्ट टा बाहरिवो जेमती सपोज तमरो सुगर केन रो प्रोडक्ट को हला सुगर केन इज भारी सुगर केन जेतले तार हुए सुगर केन रु कहउछ सुगर केन बाहर छी तमरो कोटा सुगर है फाइनल प्रोडक्ट यस और नो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट यस सर तो फाइनल प्रोडक्ट रो वेट आउ रॉ मटेरियल रो वेट जदि हम कंपेयर करबा रॉ मटेरियल इज मच higher than your final product, so that is why it is in weight losing industry. Not only sugar, also the molasses or jaggery. Is it okay? Yes sir. Okay. 21 with reference to the Indus and heirloom structures. हाँ बढ़िया क्वेश्चन है अभी with reference to the Indus heirloom structural zones, which of the following is not correct? It marks the limit of the Indian plate where it collides with the Asian plate and it's subducted below the latter. Absolutely correct. It is not correct.
B rate refers to the source of origin of the Indus, Yalung and Sanpo river. Hold on. It lies between the northern margin of the Himalayas. Yes. It is tectonically active structure zone, of course. एठी मु कोन पे hold on कहली एठी बुझो आंसर एटा ही हबो बी. It refers to the source of origin of Indus and Yarlung Sanpo river. बिल्कुल बिल्कुल हला इंडस कोड बारची. Yes. बोकरचू ग्लासियर हां सिंगी पॉइंट बोकरचू ग्लासियर सिंगी खंबम शेमा यांगडुंग ग्लेशियर हला शेमा यांगडुंग ग्लेशियर सेटू से बाहरची. ठीक अछि जोटा कि तमरो जदि मु कहबी if it is you look at the map just सर शेमा यांगडुंग रो ब्रह्मपुत्र बाहर हाँ सॉरी शेमा ब्रह्मपुत्र बाहरची तमरो हाँ सॉरी मु कहबी जस्ट अ मिनिट एटी देखो এই জায়গাটা তুমি দেখিছো মানসরোবর আর লেক রাকাস মানসরোবর লেক লেক রাকাস হলা ইন্ডাস বাহারি के एपटू गला ब्रह्मपुत्र भी तमरो एपटू बाहरला हला सतलुज भी एटू बाहरची. ठीक अछि ए गोटिए पॉइंट तो लेक राक्षस तल जोटा अछि देखु जना एटलास धरि के वस्तु समझते हला मानसरोवर लेक पाखरु और लेक लक्ष्यस्थल ए जगह से बाहर अछि कैलाश रेंज पका पके हला सर मानसरोवर ता तळे राक्षस ता ऊपर है ना मानसरोवर और राक्षस लगा लगी हे अछंती ना मानसरोवर और तमे जदि देखिबो किंतु मानसरोवर ता तळे एपट राइट साइड को राक्षस ता ऊपर सिस्टम मु कहली एटा तमरो राक्षस और एटा मानसरोवर ए माने एडजेसेंटली दे प्लेस लाइक दिस वन ना ए रीजन ता मु कहूची ए रीजन रु मानसरोवर ये ठीक है. राक्षस इज लेफ्ट एंड मानसरोवर इज राइट. ए रीजन रु राक्षस मानसरोवर जदि हम देखिबो माने एडजेसेंटली प्लेस्ड अछंती ऊपर तळा ना. ठीक है देखु एटलास रे आ जोटा कि तमर एटा आसी को रेंज आसीबो लद्दाख ना काराकोरम ना कैलाश ना पीर पांजाल कोड आसीबो एटा कैलाश रेंज वेरी गुड सर से भी सतलेज रिवर बाहर छ ना कैलाश रेंज रो आसीबो. हां कहले सर से राकास और मानसरोवर कैलाश सतलेज रिवर टा बोलते हैं कैलाश रेंज रो बाहर छ जदि देखो क्वेश्चन आ थ्री डिस्कशन जानले ए तोर पछला को रेंज रो देन यू हैव टू गो फॉर द कैलाश रेंज हैला. ठीक अछि कैलाश रेंज टा कोदरे आसीबो ग्रेटर हिमालय रे आसीबो ना मिडिल हिमालय रे ना ट्रांस हिमालय रे ना कोदरे आसीबो ट्रांस हिमालय. वेरी गुड बहुत बढ़िया वेरी गुड हैला. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा with reference to the cloud burst consider the following statements. Orography lift is primarily responsible for the cloud burst in a orographic lift is primarily responsible for cloud burst in a particular area. It is more prevalent in mountainous regions than in the plains. It is more prevalent in the mountainous regions than in the plains. A Doppler radar system can be used to predict the cloud burst. प्रथम बुझो orographic माने कोन. This is all are correct. सब जगह correct है. Sorry. Orographic माने particular कौन हो orographic rainfall when clouds are ascending on a mountainous surface. This is the leeward side, leeward side, this is the windward side. So the orographic rainfall it is the primary responsible for the particular area. यदि मु केदारनाथ रा इंसिडेंट देबी केदारनाथ हला केदारनाथ कोठी रे उत्तराखंड तमे देखियो most of the Uttarakhand and Himachal is वर्तमान वर्षा is because of the cloud burst. प्राय पे देखो तो incessant rain होची continuous rain होची ना it is because of कौन हुए your cloud burst. Cloud ऊपर जीवो हला एपड सब खेले ही परिवनी and when it is get saturated
it eventually burst, phati jay, and because of that massive damage has occurred. Hala? So that is why it is correct. Padal ta uthi jay. This is correct. More prevalent in the mountainous regions, for example, Uttarakhand and Himachal Pradesh. Doppler radar system, जोटा कि तुम्हारा sound effect जोटा हुए, जो तरीके से हमने cloud burst को predict कर देंगे इस system पे. Doppler और radar system. So all are correct. Is it okay? Yes, sir. Right. 23 number question. With reference to the Gondwana system, consider the following statements. Gondwana rocks are found in the states of Madhya Pradesh and Andhra Pradesh. Gondwana system. More than 90% of India's gold reserves are found in the Gondwana rocks. More than 90% of India's gold reserves found in the, this is absolutely correct. Gondwana states in the Madhya Pradesh and Andhra Pradesh. Gondwana rocks. This is also correct. So both are correct. Okay. Yes. Question number 24. Consider the following pairs with reference to the drainage patterns of river. With reference to drainage patterns of rivers. Indus dendritic pattern, Swan River radial pattern, Brahmaputra terralis, Godavari centripetal. ठीक अच्छे ये आंसर जब देखियो हमारा इंडस जस्ट dendritic correct Swan radial pattern में these three are correct. Godavari centripetal no है ना गोदावरी भी centripetal no गोदावरी जब तुम्हें देखियो ब्रह्मपुत्र is terralis and गोदावरी sorry Godavari is centripetal is correct. Brahmaputra तमरो no terralis Brahmaputra is dendritic pattern. कहीं की Swan is correct radial गोदावरी भी correct इंडस भी करेक्ट कहीं की हिमालयन स्ट्रक्चर ऊपर जो जो माने फॉलो करूचंती मन रखो लिखिनिया मेनी रिवर्स इंडियन रिवर्स दो जो आर हला माने हिमालयन रिवर्स दो जो आर फ्लो इन द टेक्टोनिक बेल्ट टेक्टोनिक प्लेट ऊपर फॉल्ट लाइन में फ्लो करूचंती सेठी से माने डेंड्रिटिक पैटर्न दे जान हला प्लीज नोट इट मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स दे flow in the tectonic zone and because of that there is dendritic in nature. So answer is here, only 3 is correct. Brahmaputra terralis no. See. ठीक है जी Himalayan rivers मैंने लिखी लिया most of them बाकी दो जो उतरे most of the Himalayan rivers they flow on the fault line. Due to this they are having dendritic nature. Okay, dendritic nature पुनी कौन? Dendritic nature means these rivers flow. It is believed that these rivers flow before the evolution of the Himalayas. ठीक है जी before the evolution of Himalayas these rivers flow. So this is one dendritic point. सर ये रेडिकल आउट ट्रेली Yes. जो रेडिकल सिस्टम आउट ट्रेली सिस्टम जो पैटर्न ना ये टाइप का क्लियर रेडियल सिस्टम रे माने पर्टिकुलरली रिवर रे जो सेने जो सैटेलाइट नहीं चंती रेडियल टाइप रो हैला माने तारा जो फ्लोटा हिची सेटा रेडियल टाइप रो एमती रहिची पर्टिकुलरली टेरलिस माने पर्टिकुलरली ताकू आउट न्यूमरस स्ट्रीम आस्क सब जॉइन करते इट इज जस्ट लाइक दिस वन टेरलिस पैटर्न इट इज लाइक दिस इज द टेरलिस पैटर्न. Sir, सेटा जो कह कहले most of the Himalayan rivers they float on the fault line. Okay. And secondary dendritic means these rivers flow before the evolution of Himalaya.
ता पूर्व से फ्लो करछन ते जो डेंड्रिटिक को है Is it okay? Shall I proceed? Yes. 21 number question. Sorry, 24 Sir, sir. Godavari ta dendritic haba to? How come the Godavari is dendritic? Godavari is your peninsular rivers. है Himalayan rivers माने Indus, Ganga and Brahmaputra. Only, sir. ठीक है. 25 number questions. Dala. You and your friend, बढ़िया question. You and your friend decide to go on a river rafting trip. River rafting बुझ्छो तो ये जो गंगा नहीं की जो माने ये नहीं की सवाने जो करंते है ना on the Kaveri river from Karnataka to Tamil Nadu. ठीक है जी. In this context, consider the following statements. You will not come across any river islands on your way. ठीक है जी. You will come across Pancharagams or 5 sacred Hindu temples on the banks of the river. Okay. Then you will find Hoganakal Falls in the border between the Tamil Nadu and Karnataka. Yes, this is also correct. Hello? Panchanagam or the 5 sacred Hindu temples on the banks of the river. If you go to the Kaveri, this is correct. One time, it may correct no. You will not come across any river islands. It is something to know. Hello? Valleys je to a river bahuchi particularly. Hello? Kaveri river upare. ठीक है जी. Kaveri जो बाहर से तो सिटी सेमती भी नहीं. Kaveri there are also the plain areas, deltaic lands also there. है ना? Tanjavur और मदुरई पकड़ पकड़ तो इट this is wrong. One is wrong. So answer is only 2 and 3. In highly creative questions. 26 number. Which of the following are the features of zero tillage farming? Zero tillage farming किए growing crops without digging or overturning the soil layers. Growing crops without digging or overturning the soil layers. Effective utilization of residual moisture. ठीक है जी. Zero tillage farming. Growing crops without digging, overturning the soil layers. Effective utilization of the residual moistures. This is correct. This is also correct. Increase in the compaction of the soil. No. Zero tillage pressing compaction of the soil. Minimum risk of carryover disease in crops. Minimum risk of carryover the disease in the crops. No. Only 1 and 2 are correct. 27 number question यदि देखियो. With reference to the syntaxial bands of the Himalayas, consider the following statements. Syntaxial band माने कौन बुझ्छो? हिमालय एमती हला. इस हिमालय स्ट्रक्चर यदि देखियो like this one. अच्छी नहीं, ये बेंड है कि अच्छी हिमालय. देखिए ठीक. हिमालय टाइम पे बेंड है कि अच्छे हम ऊपर है ना. ठीक है, इनको बेंड है कि अच्छे सिंटैक्सियल बेंड ताको कहंती. तो देखो इंडिया मैप जदी तुम एटलास खोली देखी जो इंडिया मैप इट इज लाइक दिस बेंड है कि अच्छे. कौन कौन है रीजन रा? दे आर सर इंडियन प्लेट रोटेशनल मूवमेंट जो they are southward bends of cliffs of the Himalayas formed are the river gorges.
बिल्कुल absolutely correct. केमती इंडस सांगपो गर्ज कोडी अछि इंडस सांगपो गर्ज टा नामचा बरुवा वेरी गुड नामचा बरुवा कोडी अछि को स्टेट रे अरुणाचल वेरी गुड अरुणाचल प्रदेश है ना अरुणाचल प्रदेश southward bends of the cliffs of the Himalayas from the river. This is correct. These bends are absent in the western Himalaya region. ठीक है जी कौन कहला ये जो बेंड बड़ा वेस्टर्न हिमालयन रीजन रे हमरा एब्सेंट अछन नो बिल्कुल भी नो नंगा पर्वत रे सिंटैक्सल बेंडिंग अछि सिंटैक्सल बेंड नंगा पर्वत रे भी अछि सो इट इज रॉन्ग ड्यू टू दिस बेंड्स द ब्रह्मपुत्र रिवर मेक्स यू टर्न इन दिस कोर्स एब्सोल्युटली करेक्ट है ना सो आंसर है ओनली 1 and 3 28 number Bhabha region is the best corresponds to which of the following regions? Bhabha region basically देखिए it is a narrow belt laying parallel to the slopes of the Shivaliks in Punjab and Haryana. Plain over the Uttar Pradesh formed with the alluvium brought by the rivers Satluj, Beej and Ravi. Area where rivers re-emerge and create a wet, swampy and marshy regions, relatively higher part of the plains that is never covered with flood water of the rivers. Narrow belt lying parallel to the slopes of the Shivaliks. And the answer is D, correct. Tarai Bhabar, that's very easy. Tarai ta kudi dekha jai? जोटी disappear है जे all the stream in this. Yes, all streams. Kudi. Nepal and Uttarakhand. Yes sir. Bhabar ta kudi asibo? Puri Uttar Pradesh. Hala? How se Nepal region puri seti re-emerge hobo. Streams are re-emerge. Next, which of the following statements best describes the factory farming? Factory farming is देखिए what is the it involves the cultivation of crops on large estates primarily for sale in the market. It is the intensive cultivation practice and the small farms using machinery. It is a system where the companies engaged in processing of the agricultural products entered in the contract with the farmers. It is an industry facility that raises large number of farm animals in the intensive confinement. So it is factory farming that the best suited it is D for Delhi. Thirty point आज हम discuss करूँची, पुनी next class रे will continue with the other questions. है चिल्का लेक जो तुम देखिए हाँ लेक देखिए lakes and features चिल्का लेक है largest brackish water lake in India. Pangong है ना Pangong highest freshwater lake in India. ठीक है जी this is correct. Pangong Lake is the highest freshwater lake in India. Vembanad Lake largest Ramsar site in India. Pangong Sota Kodi? Ladakh रे. Ladakh. Pangong So is the highest freshwater lake. No sir, no sir. Salt water lake. Ullar है freshwater. Saltwater lake. Saltwater lake Pangong केम दिया? What is the glacial period pa? Brackish. केम तेरी? It is तो wrong. It is the highest freshwater जे आ ऊपर भी आगुटे अच्छी तो I think So Morari is there. Yes sir, so very lake. हाँ So Morari is there. ठीक है जी? तुम्हारे जो 3 idiot pictures वो देखते ना? Last 3 idiot pictures से lake का ना कौन थिला?
Tangongso. पैंगोंगसो ऊपर भी अच्छी है ना सो मोरारी और ये अच्छी हाँ सो इटा भी भूल वेमनाथ लेक इज द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया नो वेमनाथ लेक the longest lake है ना लॉन्गेस्ट हम कह परियो इट्स नॉट लार्जेस्ट इट इज sir pangong lake ta salt water lake नहीं अरे अरे केमती हबो सॉल्ट वाटर से तो पूरा ऊपर ग्लासियल फेडेड ना हिमालय रे रछि ना केमती हबो फ्रेश वाटर लेक इट इज करेक्ट बट बुक रे दीटा जाको देछि सर नो नो तमे निजे भाबो कि देखो बुक रे नहीं हम देखो बुक मे बी ये इंटरप्रेट करते हो मे बी रॉन्ग समझी तो बुक रे लिखु छी जॉक फॉल्स इज द हाईएस्ट फॉल जॉक फॉल्स को हाईएस्ट फॉल वाटरफॉल no sir देन sir. कुंचिकल इज द हाईएस्ट वाटरफॉल कुंचिकल बराही river सुनो से जिंस हम सब बड़े देखो सिंस वी आर प्रिपेयरिंग इन अ ब्यूरोक्रेटिक लेवल एग्जाम सो आवर एनालिटिकल एबिलिटी हैज टू बी स्ट्रांग in it is not that we anyone who has given it is we have to believe that in blindly okay so we have to also cross check ठीक कि नहीं तो मु एथि पे कहल तमे निजे भाबो 6500 मीटर ऊपर एवरेज अल्टीट्यूड ऊपर कोड तमर सिटी हेड तो ग्लासियर हैला तमर माने स्नो सियाड कोड तमर आसो सिटी तमर सर एटा एंडोरिक बेसिन ना हां एंडोरिक बेसिन ना एंडोरिक बेसिन एटा होई परियो नहीं मु कहया कथा है कि फ्रेश वाटर लेक से माने सब बळे दे आर ऑल ग्लासियल फीडेड मन रखो सिंपल मुंडरे पर दे आर ग्लासियर फीडेड सिंपल दीटा जिंस लार्जियर फीडेड हां तमे आकु कहि परियो लेक को कोटा सैलिनिटी लेक और सलाइन लेक तमे कहि परियो पुष्कर लेक को कहि परियो लोनार लेक को कहि परियो बिकॉज़ दे आर ओनली कन्फाइंड दैट वन और से माने हैला पर्टिकुलरली तोर गोटे स्ट्रीम रु फेडेड और से मानकर किछि नाही माने देयर इज नो आउटलेट हैला ट्रॉपिकल एरिया बट एमाने सब फ्रेश वाटर लेक काहे से माने सिंपल ग्लासियर रु कारण से मानकर प्रेजेंस अछि 6500 मीटर ऊपर सिंपल कथा है हैला सो पैंगोंग सो तो हबन पैंगोंग सो ऊपर भी सो सर विकिपीडिया सालाइन वाटर लेक देखो देखो सर इट सैलिनिटी ता लेस अछि बट सेटा सलाइन वाटर रहबो कारण सेटा ग्लासियल वाटर जो पानी ता सैलिनिटी कम अछि बट टेम्परेट रीजन में अछि ना एवापोरेट हे जाय देखो दिस मे बी डिबेटेबल बट मु एते कहबी कि सर एटा लैंड लॉक्ड बेसिन सर सेति पय सलाइन लेवल से अधिक अछि सर मु भी Landlocked आपण रही जेमति होती कि भाबिले सेमति भाबिथिली बट एट एंडोरिक जोगु मु पढिली जे तापरे एंडोरिक जोगु एटा माने सॉल्ट वाटर लेक होची बट एटा तो माने अच्छा ठीक अछि जस्ट होल्ड ऑन कि मते को 6500 मीटर ऊपर माने पानी कोठु पाउबे रिवर दोउची ग्लासियर नो सर ग्लासियर ग्लासियर सिंपल ग्लासियर्स प्रथम पॉइंट रे जदी तो मेटा सलाइन को ओके होल्ड ऑन लेट अस हैव एन ऊपर भी अछि सियाचिन नुब्रा वैली एडा सब अछि जे एग्जैक्टली तो होल्ड ऑन एटा को होल्ड करी देखियो डेफिनेटली लेट मी गो थ्रू वेरी माइन्यूटली आई विल से बट मन रखो तमे माने समझ एटा एग्रीड कि नहीं एटा फ्रेश वाटर लेक बोली माने ग्लासियल फेडेड बोली यस और नो सर यस और नो मतलब ग्लासियल फेडेड यस सर यस सर ग्लासियल फेडेड माने ग्लासियल फेडेड माने फ्रेश वाटर हबो कि नहीं यस सर salinity yes sir regarding salinity let us have a very minute examine for me आउट देखिए एटा कहूची हला सो as per me this is not highest आ ऊपर को सांगंग सो ऊपर को भी तमरा नुब्रा वैली ऊपर सेठी भी लेक बजा yes sir not highest regarding this salinity of course I'll have a bit minute study देखिए कोन ता कहउछन but मन रखो these are all glacial faded and plus glacial faded की कोन होची प्लस सेटा तमरा फ्रेश वाटर हला सो आंसर जदी मेटी देखिबी तमरा 30 इज योर ए ओनली करेक्ट चिल्का एटा हम होल्ड रखु छी हम नेक्स्ट डे को डिस्कशन करियो आज पे एति की थाओ हेलो सर हां यस सर जम्मू कश्मीर रो डाल आ ओलर लेक एगुडा को भी फ्रेश वाटर लेक रे जीवन ऑफ कोर्स डाल लेक रो तम पानी जन आई हैव बीन टू सी विजिटेड टू दैट प्लेस पूरा पानी जवाहरलाल नेहरू से पाखरे जो गार्डन अछि तमर मोगल गार्डन सेठी ऊपर झरना पानी अछि से पानी आस्तु जवाहरलाल नेहरू पानी पिउतले तुम जीवो त केतले बुल्ली जीवो से माने गाइड माने कहबे इत्ते मीठा पानी मु निजे पी के देखि छी कंप्लीटली गैसियल फेडेड पे निजे भाबो इत्ते पहाड़ ऊपर पानी कोठु आसीओ
ସେଇଠୁ ଝରିକି ଆସୁଥିବ ନା ଅଫକୋର୍ସ ତ ସେଠି ତ କୌଣସି ରିଭର ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ବି ରିଭର ଆସୁଛି ସେମାନେ ସେଇ ଛୋଟ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସେଇ ଗ୍ଲାସିୟର ରୁ ଆସୁଥିବ and that is unintermittent ମାନେ continuous supply perennial. Yes. of course glacials are perennial ठीक ଅଛି ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ ରଖୁଛି we'll meet again Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. thank you bye bye Thank you, sir. Sir, good night, sir. okay thank you all of you Sir, ଟିକେ climatology ଟା କେତେବେଳେ ଟିକେ revision କରିଦେବେ। अच्छा हो ठीक ଅଛି sure okay thank you all of you Sir, काली geography class ହେଇଥିଲା କି evening ରେ? କାଲି ମୁଁ ତ ନେଇଥିଲି ରେ geography ରେ କାଲି ତ ନେଇଥିଲି ମୁଁ Sir, ଆମକୁ link ଦେଇ ନଥିଲେ। Sir, ଆମେ link ପାଇନୁ। ସେଟା ନୂଆ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି କହିଲେ। ସେଟା ନୂଆ କହିଲେ ସେଟା ପିଲାଙ୍କ ନୂଆ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ହଉଛି ବୋଧେ it's କ୍ଲାସ। a new batch I'm taking a new batch I'm taking ମାନେ ସେଇଟା ହେଲା ମୁଁ ଦେଖିଆ କଥା ହେଇକି କଥା ମାନେ ଇ କରୁଛି new batch ଯୋଗୁ ବୋଧେ ଦେଇ ନଥିବ that is a different varied link for that one ହେଲା ସାର୍ ଆମକୁ ବି ସେ ନ୍ୟୁ ବେଚ୍ ସହିତ କ୍ଲାସ୍ କରେଇଦେବେ। ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ସାର୍। ମୁଁ सर ए ग्रुप रे अलगा ग्रुप पिलांको भी एलाउ करचंदी सर माने न्यू बैचेस को भी सर तो टिके रिक्वेस्ट करिवे सर सर को एलाउ भी कर देबे सर ठीक हम আছে let me talk with दीपक sir and not माने से जिंस थिबो को माने तमरो एक्चुअली तो माने बते सरी जाईची ओल्ड बैच मानकर से जो मु कहतली बोधे मे बी हला ठीक अछि let me talk with once हला I'll कथा को we'll again meet thank you all of you bye Thank you, sir. bye take care Thank bye you, take sir. care Thank bye you, sir.